Hello everyone, welcome back to another important video on a very important thing which is very much important for your exam, which is the previous year's questions, the PYQs. Before going to any war or battle, it is most important that you know your enemy, and how your enemy looks like, so that you can fight your enemy properly. Similarly, for an examination, it is very important to see the PYQs, the previous year questions, so that you know that what kind of questions, what are the type of questions that the exam is trying to throw at you. ठीक है, वो कैसे सवाल वो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है. Once you get a hold of that, you will be easily able to answer a lot of questions in the exam that you will attempt. क्योंकि इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन सेम तो रिपीट नहीं होता है यूजुअली, कभी कभी वो भी हो जाता है, बट द टॉपिक एंड थीम ऑफ द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट नियर बाय. एक मतलब किसी टॉपिक से मैं यहाँ कोई सवाल करूंगा, वो टॉपिक से शायद सेम क्वेश्चन ना आए, बट उसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन आ जाए, एंड इन अ सिमिलर टाइप. So it is very important to see PYQs. So I request everyone watching this video that PYQs को regularly practice करो, and it will also tell your weaknesses कि आप weak कहाँ हो. Accordingly, you can get better, sharpen up little more, and increase your score in the PYQs and mocks ताकि आप real exam में जाके अच्छा कर पाओ. Today we will discuss some PYQs from biology. ठीक है? From the cell chapter. ठीक है? Cell theory and the basic structure of cell. So let's start the PYQs one by one. The first question says, which one of the following is the smallest tuning unit showing the properties of life, such as capacity for metabolism, response to the environment, growth, and reproduction? The correct answer is option D, cell here. Because what is cell's definition? The cell's definition is cell can be defined as the basic structure, the basic structural and functional unit of life. मतलब जिंदगी का वो सबसे बेसिक फॉर्म जहां से लाइफ हमारा आता है, वो हमारा जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, हमारे बॉडी के इतने सारे फंक्शंस है, ऑल ऑफ इट इज हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ वन स्मॉल थिंग कॉल्ड सेल. और ये बहुत सारे सेल्स हमारे बॉडी में मिलके दे आर गिविंग अस द स्ट्रक्चर और द फंक्शंस दैट वी हैव. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, सेल. Coming to the next question. Eukaryotic cells are much more complex as compared to prokaryotes. Which one of the following structures is exclusively present in a eukaryotic cell? Now, what is the difference between eukaryotes and prokaryotes? In prokaryotes, the nucleus does not have the nuclear membrane. ठीक है? The nucleus is not properly separated from the cytoplasm by the nuclear membrane. Prokaryotes, they lack two things. The first, the nucleus does not have a nuclear membrane. But on the other hand, eukaryotic cells are more developed. Their nucleus has a nuclear membrane. It is covered by a nuclear membrane. Second difference is that eukaryotes have certain membrane-bound organelles. Organelles are nothing but certain parts or structures present in the cell that have some kind of dedicated function. For example, ER, endoplasmic reticulum, is an organelle which helps in synthesis. And then you have Golgi bodies. It's another organelle. It helps in the packaging of food, packaging of proteins, lipids, so on and so on. Then we have mitochondria, which is an organelle that helps in energy production in the cell. So this way, eukaryotic cells, they have membrane-bound organelles. But prokaryotic cells do not have membrane-bound organelles. So what is the difference here? Prokaryotic cells have a nuclear membrane above the nucleus. Prokaryotic cells have membrane-bound organelles. Eukaryotic cells have a membrane over the nucleus, the nuclear membrane, and eukaryotic cells have membrane-bound organelles. But prokaryotic cells don't have both of them. Now, look at the options. Cell wall, no. Your bacteria, which comes under the kingdom Monera, even they have a cell wall. Their cell wall is made up of peptidoglycan. But bacteria is a prokaryote. Option B, plasma membrane. Well, bacteria again is a prokaryote, but it does have a plasma membrane or the cell membrane. Option C,
Nucleic acid is present in DNA and RNA. Don't bacteria have DNA, RNA? They do. Bacteria have DNA and RNA. So yeah, nucleic acid is also present in prokaryotes. But option D, mitochondria? No. Mitochondria is present in eukaryotes but not in prokaryotes. Why? Because mitochondria is a membrane bound organelle. Okay? It is responsible for energy production. That is why it is also known as the powerhouse of the cell. Again, the correct option for this question is option D, mitochondria. The next question is, which of the following cell organelles is absent in animal cell? We are animals, humans. Do we have a cell membrane? Yes, we do. Our cells have a cell membrane. Endoplasmic reticulum? Yes, all cells have an endoplasmic reticulum. All eukaryotic cells have an endoplasmic reticulum. Mitochondria? Yes, because we humans are also having energy in our body. Don't we have an energy to move? We do. But cell wall? No. Animal cells lack a cell wall. Animal cells do not have a cell wall. Animal cells have a single covering over their cell, which is known as the cell membrane or the plasma membrane. On the other hand, plant cells have two coverings. One is the plasma membrane, which we also have, common with us. Above the plasma membrane, the plant cells have an extra covering known as the cell wall. In plants, cell wall is made up of cellulose. Fungi also have a cell wall, but the fungal cell wall is made up of chitin. And the bacterial cell wall, as I said before, is made up of peptidoglycan. So the correct answer for this question is option C, cell wall. Which one of the following is not an example of a eukaryotic cell? इसमें से eukaryotic कौन सा नहीं है? We have 5 kingdoms in classification: Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. Whoever belongs to Monera kingdom is a prokaryote. Protista onwards, everyone is a eukaryote. ठीक है? Option A is yeast. Yeast comes in kingdom fungi. Of course, then yeast is a eukaryote. Yeast is a eukaryote. We have been asked which is not an eukaryote. Please remember this. Many children, many students make this mistake. I have seen it over the years that they don't read this not. They don't see the question properly. They don't read this not. They'll read it as which of the following is an example of eukaryotic organism, and they'll mark one of the wrong answers. They have asked which is not an eukaryotic organism. Yeast comes in kingdom fungi. Fungi is eukaryotic. So yeast is wrong. Plant. Plant is kingdom Plantae. So plants are also eukaryotic. And we humans, humans are part of kingdom Animalia. We are animals. Again, we are eukaryotes. But option B, bacteria. All bacteria in this world are part of kingdom Monera. And hence, bacteria do not have a nuclear membrane. Bacteria do not have membrane bound organelles. And hence, bacteria are not eukaryotic organisms. Bacteria are prokaryotic organisms. The correct answer for this question is option B, bacteria. The next question is, which one of the following groups of cellular organelles contains their own DNA? यहाँ पे देखो देखो हमारे सेल में तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता ही होता है. We have a cell's DNA in the nucleus. Other than that, the organelles present in our cell other than the nucleus, ठीक है, some organelles are there which again contain their separate own DNA inside this. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनली है जिसके पास खुद का डीएनए होता है. ठीक है, लेट्स लुक एट दी ऑप्शंस. यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन दिया है और बोला है कि इसमें से कौन से कॉम्बिनेशन में होता है. Look at the first option, mitochondria, nucleus, and chloroplast. Always remember these two organelles in cell have their own DNA. एक है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, जिसको प्लास्टिड्स भी कहते हैं. प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स. प्लास्टिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. और एक टाइप का प्लास्टिड ही होता है क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, जो प्लास्टिड ग्रीन कलर का होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है,
दैट प्लास्टिड इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। जो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं उनको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, और जिन प्लास्टिड में क्लोरोफिल के अलावा कोई दूसरा पिगमेंट होता है, दोस कलर्ड प्लास्टिड्स आर नोन एज क्रोमोप्लास्ट्स। ठीक है। सो प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव डीएनए, एंड न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए हमारे बॉडी का जो खुद का डीएनए है वो तो होता ही है इन द क्रोमोसोम्स। सो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, ऑल थ्री ऑफ देम कंटेन डीएनए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, one of the additional functions of smooth endoplasmic reticulum is what? See, the difference between smooth ER and rough ER is that rough ER contains ribosomes on its surface, because of which when you look at rough ER under a microscope, it will appear the surface appears very rough, क्योंकि उसके ऊपर वो ऊपर खावर राइबोसोम्स रहते हैं। बट स्मूथ ईआर के ऊपर सरफेस पे कुछ नहीं रहता, राइबोसोम्स नहीं रहते, एंड दैट इज वाई स्मूथ ईआर लुक्स वेरी स्मूथ, एकदम प्लेन। तो अब राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब रफ ईआर में राइबोसोम है, तो रफ ईआर का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस, बट स्मूथ ईआर में राइबोसोम्स नहीं है, तो स्मूथ ईआर प्रोटीन का सिंथेसिस तो करेगा नहीं। दैट इज वाई द फंक्शन ऑफ स्मूथ ईआर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, फैट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लिपिड सिंथेसिस। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements regarding viruses is not true? मतलब इसमें से false कौन सा है वो पूछा है। ऑप्शन ए, viruses need living cells to reproduce. All viruses are parasites. Viruses can synthesize their food through photosynthesis. Viruses are similar to chemical substances outside the host. अब यहां पे एक चीज देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या चाहिए? जो सी ऑप्शन है, वायरसेस कैन सिंथेसाइज फूड थ्रू देयर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए यूनिट क्लोरोफिल एंड यूनिट सेल्स। वायरस इज एन ए सेलुलर एंटिटी, मतलब वायरस का कोई सेल ही नहीं है। वायरस इज जस्ट अ पीस ऑफ डीएनए और आरएनए which is protected by a protein coat. The name of the protein coat is capsid, and capsid is made up of many small units called capsomeres. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस तो वायरस कर नहीं सकता, तो ऑप्शन सी इज फॉल्स। वायरसेस कैन सिंथेसाइज देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, नहीं, ये पॉसिबल नहीं। ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू, ऑप्शन सी इज फॉल्स। दीज आर करेक्ट आंसर। Now look at the next question. Which of the following statements regarding the animal cell membrane is correct? हमारा जो एनिमल सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बारे में इसमें से कौन सा करेक्ट है वही पूछा है। चलो देखते हैं। ऑप्शन ए, दे आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स ओनली। नो, खाली फॉस्फोलिपिड्स थोड़े होते हैं, देयर आर मेनी अदर थिंग्स, वी हैव प्रोटीन्स, वी इवन हैव लिटिल ऑफ शुगर्स, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल है, the shape of the cell membrane, the shape of the cell membrane, the model of the cell membrane is also known as the fluid mosaic model. The fluid mosaic model. अगर तुम fluid mosaic model को देखोगे, you will know that उसमें बहुत सी चीजें हैं, globular proteins वगैरह बहुत कुछ है। Phospholipid is not the only thing. It has a phospholipid bilayer, मतलब दो लेयर्स से एक सेल मेम्ब्रेन बना है, and both the layers have phospholipid, so it is called phospholipid bilayer. और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में बहुत सारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स एम्बेडेड रहते हैं, बहुत सारे कोलेस्टेरॉल के पार्टिकल्स भी एम्बेडेड रहते हैं। सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स ओनली, अगेन इट्स रॉन्ग। दे आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स ओनली, वंस अगेन रॉन्ग, क्योंकि कोलेस्टेरॉल भी होता है। ऑप्शन डी, दे आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कोलेस्टेरॉल। Option D is the correct answer. The fluid mosaic model of the cell membrane basically shows that cell membrane is made up of a phospholipid bilayer. मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड के दो ओवरलैपिंग लेयर्स, बाइलेयर, बाई मींस टू, और उन दोनों लेयर्स के बीच में बहुत सारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स और बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल लिपिड पार्टिकल्स आर एम्बेडेड इन बिटवीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज जनरली कैरिड आउट बाय whom? राइबोसोम्स का काम क्या है?
प्रोटीन सिंथेसिस, मूवमेंट का कोई काम नहीं है इसमें, छोड़ो। ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोडक्शन, अगेन नो रोल इन मूवमेंट। लाइजोसोम, लाइजोसोम आर सुइसाइड बैग्स ऑफ द सेल। लाइजोसोम एंजाइम सीक्रेट करता है और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, सेल के अंदर जो डिफरेंट पार्टिकल्स वगैरह है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। लाइजोसोम इज अगेन नो। बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज करके फिर उसको ट्रांसपोर्ट भी करता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसाइजिंग केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस वेयर। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैज एन आउटर मेम्ब्रेन, अंदर में द माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर्ड बाय एन इनर मेम्ब्रेन आल्सो, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो बीच का एरिया है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और उसी मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए रहता है, ठीक है। अब एटीपी सिंथेसिस कहां होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? द एटीपी सिंथेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। वैसे तो थोड़ा बहुत मैट्रिक्स में भी रिएक्शंस होते हैं, बट द एटीपी सिंथेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question is, which one of the following cell organelles does not possess nucleic acid? न्यूक्लिक एसिड कहां होता है? न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड इन आरएनए। तो पूछा इसमें से कौन से ऑर्गेनेली में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए रहता ही है, तो न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियोलस, एंड द न्यूक्लियोलस कंटेन्स द डीएनए। तो न्यूक्लियोलस में तो डीएनए रहता ही है बॉडी का, तो न्यूक्लिक एसिड होगा वो। Chloroplast, as I said, chloroplast is a type of plastid and plastids have their own DNA. Again, B is correct. अब आता है C और D, राइबोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वी स्टडीड लिटिल बिट अर्लियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ a phospholipid bilayer and it contains cholesterols and globular proteins embedded in it. All right, तो इसमें तो न्यूक्लिक एसिड का कोई रोल है नहीं। राइबोसोम ऑन दी अदर हैंड इज आरएनए, आरएनए में भी न्यूक्लिक एसिड होता है, तो एबीसी हैज न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट हैव न्यूक्लिक एसिड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following cell organelles does not possess its own genetic material encoding proteins? देखो जेनेटिक मटेरियल जो है ना, उसका मतलब यहां पे डीएनए से है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। अब यहां पे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ऑल थ्री ऑफ देम हैव देयर ओन डीएनए। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, बट राइबोसोम में कोई डीएनए का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, ओनली आरएनए होता है, सो दैट डज नॉट वर्क आउट। उससे खाली आरएनए अगर होगा तो उससे प्रोटीन नहीं बन पाएगा, ठीक है। उसमें कोई डीएनए का जेनेटिक मटेरियल नहीं है जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस का इंस्ट्रक्शन मिल पाए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राइबोसोम। राइबोसोम डज नॉट possess its own genetic material which it can use for encoding proteins. Coming to the next question, which one of the following is an organelle that is not found in prokaryotic cells? ठीक है, once again सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, both of them are present in your bacteria which is a prokaryote. ऑप्शन डी राइबोसोम। अब तुम कहोगे राइबोसोम भी तो ऑर्गेनेली है सर। यस, राइबोसोम ऑर्गेनेली है, but ribosome is not a membrane bound organelle. What did I say? Prokaryotes do not have membrane bound organelles, but ribosome is not membrane bound, so ribosome is present in prokaryotes as well. But mitochondria, again, mitochondria is a membrane bound organelle, it is not found in prokaryotic cells. Answer is option B, mitochondria. Now the last question for the day, जिसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में नीचे। Who among the following first discovered the cell? Option A, Robert Brown. Option B, Robert Hooke. Option C, Leeuwenhoek. Option D, Rudolf Virchow. अब इन चारों में से किसने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था? इसका करेक्ट आंसर आप लोग मुझे बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। आई होप दिस वाज एन हेल्पफुल वीडियो।
एंड इट्स दी PYQs डिड गिव यू एन आइडिया कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से शो अप होते हैं एग्जाम में. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. जय हिंद.